Okay, great. Good afternoon. Okay, guys, good afternoon, everyone. Welcome to this program. This is a foundation program on trading and investing. We have completed 2 days of training. We learned about technical analysis. We learned about investing. We learned about, charts in the previous 2 sessions. So today we are going to learn about option trading strategies. Okay. So with us today, the speaker is Mr. Manish Shah. Manish Shah is a very seasoned trader and analyst, over 25 years of experience in the market. And he has been associated with many top brokers, institutions as a research analyst. And he's a full-time trader and as a research analyst currently. He's a SEBI-registered research analyst. Now, before quickly, I'd like to give you the disclaimer. Okay, investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Representations are not indicative of future results. All discussions are purely educational in nature and are in no way an advice or recommendation. So by having said that, I would like to invite Manish. Manish, if you can hear my voice, can you please I open? can hear your voice. So, Yeah, thank you. Thank you, Manish. uh, good evening, everyone. I hope that we have a very smooth session. Just a small announcement to make. Just in case there is some issue with the internet, I have a secondary backup also, but it should not happen. But you never know because it's raining very heavily in Mumbai. Anyway, so let's straight move on to uh, what we are going to do today, and I hope you can see this. I hope you can see my presentation slide title Introduction to Options. Yeah, I hope you can see the slide. Yes, yes, Manish. We can see the slides. So, so just trying to recall what we did in previous two sessions. In the first session, we just introduced you to stock markets and what are exchanges, and there was a little bit of discussion on the fundamental aspects. We also talked about indices, among other things. In the next session, we talked something on price action analysis, technical analysis, candlesticks, price patterns, and resistance. Very these concepts were introduced at very very basic level. तो अभी हम क्या करने वाले हैं? तो आज हम करने वाले हैं we are going to introduce you to something called options trading. Now it is something that has been happening for a long time. Lot of आई वुड से थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो ऑप्शंस में लॉस करते हैं काफी सारी जो जानकारियां हैं लोगों को इससे मिलती नहीं एंड नो बट वन थिंग इज फॉर श्योर इवन द रेगुलेटर्स अगर आप बोलो अगर आप world over options are prevalent lot of trading happens in options बिकॉज इट्स देखिए ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा है वो बहुत ही वर्सटाइल इंस्ट्रूमेंट है यू कैन यूज इट फॉर स्पेकुलेशन यू कैन यूज इट फॉर हेजिंग यू कैन use it as a spread trade and income generating instrument. There are a lot of things that can be done with it. Unfortunately, very very unfortunately, काफी लोग जो options use करते हैं वो it is pure out and out speculative effect that happens and which is not a good thing because it's an instrument that can really help you uh, you know in I would say थोड़ा आपका रिटर्न बढ़ा सकता है तो काफी हद तक बढ़ा सकता है आपको जब भी ऑप्शंस में एक एक्सपर्टीज एक महारत हासिल होती है आप इसे डेफिनेटली अपने ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं बट मेरा ये कहना है कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट आप अगर ऑप्शंस में जाना चाहते हो प्लीज कुछ सालों का अनुभव लीजिए आई वुड से दैट 2-3 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट ऑब्जर्विंग ऑप्शन एक थोड़े समय के लिए कुछ समय के लिए ऑप्शंस आप ट्रेड कर सकते हो और जब तक आप लर्निंग कर्व पे हो मेरे हिसाब से यू कैन स्टिक विथ मे बी इक्विटीज ट्राई टू इन्वेस्ट इन इक्विटीज या तो फिर आप म्यूचुअल फंड्स में जा सकते हो
हालांकि कल का हमारा टॉपिक जो है दैट इज गोइंग टू बी म्यूचुअल फंड्स. सो नो, देयर आर डेफिनेटली मेनी डिफरेंट वेज ऑफ अप्रोचिंग द मार्केट. सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शंस एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में. और बेसिकली आज हम काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे. और आपको मैं बहुत सारी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में आपको दिखाऊंगा कि आप ऑप्शंस को कैसे समझ सकते हैं. और काफी चीज के मायने क्या होते हैं, मतलब क्या होता है. सो विल स्टार्ट विथ वेरी बेसिक्स. तो आज का जो अ, तो आउटलाइन है, कोर्स आउटलाइन, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस ट्रेडिंग. बाद में हम बात करेंगे व्हाट इज मेंट बाय डेरिवेटिव्स, एक बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन. फिर एक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑन व्हाट आर कॉल, व्हाट आर पुट्स. So we'll talk on that. Uh, then something on what are the terminologies. Then something on payoff charts. Then we'll talk something on buying and versus selling options. So this is the broad outline of options. And basically, options or instruments of relatively short-term instruments है, they are called as wasting assets. Wasting assets क्यों? क्योंकि वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही आपको वैल्यू देते हैं. और वो टाइम पीरियड क्या हो सकता है? जो आपका एक्सपायरी डेट है. तो ऑल ऑप्शंस, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, बेसिकली इनफैक्ट ऑल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स. तो all derivative contracts, they work on the principle of limited time. Okay. तो जब भी आप, let's say आप जब भी आप डिलीवरी लेते हो कोई भी एक शेयर का, मान लीजिए आपने कोई एक शेयर का डिलीवरी ले लिया, तो आप उस शेयर को काफी समय तक रख सकते हो. साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल, whatever. जब तक कंपनी रहेगी तब तक आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा. शायद उस इन्वेस्टमेंट्स का कुछ वैल्यू होगा. बट ऑप्शंस या डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में ऐसा नहीं है. तो अ, तो जब भी हम डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट की बात करें, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट. सबसे पहले डेरिवेटिव है ना, एक बहुत बड़ा टर्म है. सो व्हाट वी से दैट इट्स अ जेनेरिक टर्म. मतलब उसके काफी सारे मायने निकल सकते हैं. बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट बाय इटसेल्फ है डेरिवेटिव्स. सो डेरिवेटिव्स क्या है? सो डेरिवेटिव्स बेसिकली इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट. सो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. सो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट और अ प्रोडक्ट whose value is derived from some other asset known as the underlying. अंडरलाइंग मतलब क्या? आपका जो कोई दूसरा एसेट. तो दैट मीन जब भी हम बात करते हैं लेट्स से निफ्टी की, निफ्टी का जो वैल्यू है निफ्टी ऑप्शंस का, तो उसका वैल्यू कहां से आता है? निफ्टी कैश इंडेक्स. फॉर द वैल्यू ऑफ एनी डेरिवेटिव will be based on the value of the underlying. ओके. तो यूजुअली अंडरलाइंग जो एसेट्स होता है वो सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स होता है, सेम इंस्ट्रूमेंट्स होता है. तो आप मान लीजिए गोल्ड. गोल्ड का अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? ऑब्वियसली गोल्ड प्राइसेस ऑफ द कैश मार्केट गोल्ड प्राइसेस, और मे बी फ्यूचर्स मार्केट का गोल्ड प्राइसेस. बट यूजुअली आई प्रिफर टू यूज कैश मार्केट प्राइसेस to determine the value of the underlying. Not important thing. Okay. So it is basically based uh, on the value of the underlying asset. So वो कोई भी एसेट हो सकता है. शेयर्स हो सकते हैं, इंडाइसेस हो सकता है, गोल्ड, कॉपर, मेटल्स, नेम इट, इट इज देयर. सो this is the broad definition of what we call as a derivative. So derivative is a contract. ओके. सो हमेशा एक चीज समझिए, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होगा वो इट विल ऑलवेज बी विथ एन एक्सपायरी डेट. वो इनडेफिनेट नहीं होगा. 1 साल, 2 साल, 3 साल का भी हो सकता है, बट इट विल ऑलवेज बी विथ एन एक्सपायरी डेट. उस एक्सपायरी डेट के बाद वो एसेट रहता ही नहीं है, वो एसेट खत्म हो जाता है. इट इज ओवर, राइट. सो दैट इज डेरिवेटिव. सर डिफरेंट फॉर्म. देखिए डेरिवेटिव्स अलग अलग प्रकार के होते हैं. फॉरवर्ड्स जो खास करके हम फ्यूचर्स तो करेंसी मार्केट्स में यूज करते हैं, but that is used by corporate, so we are not going into forwards as such. Then दूसरा है फ्यूचर्स. वी ऑल नो अबाउट फ्यूचर्स, राइट.
तो हमारे निफ्टी का फ्यूचर्स ट्रेड होता है, अलग अलग स्टॉक्स की फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं। तो फ्यूचर्स की क्या बात खास बात होती है, हमेशा फ्यूचर्स ज्यादातर कोई एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं, सो इट इज नॉट ओवर द कॉन्ट्रैक्ट, ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं। जब भी आप फ्यूचर्स में जब भी आप ट्रेड करते हो, इट इज नेसेसरली इट इज थ्रू एन एक्सचेंज। हालांकि ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं, बट वी आर नॉट रियली लुकिंग एट द टाइम। बट so फ्यूचर्स की खासियत बात क्या है कि देट विल बी अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट साइज। तो अगर आप कोई भी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट देखते हो तो उसका एक प्री डिटर्मिन्ड साइज होगा कॉन्ट्रैक्ट का। मान लीजिए रिलायंस का अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो इट विल बी वर्थ 1000 शेयर्स। तो आपको अपनी मिनिमम क्वांटिटी पे ही ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है? अगर आप कहते हो कि मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज 1000 है और मुझे 100 शेयर्स का ही करना है, देन इट इज नॉट पॉसिबल। सो क्वांटिटी जो है वो फ्यूचर्स की दैट इज प्री डिटर्मिन्ड। सेकेंड थिंग, इट इज इट कम्स विद एन एक्सपायरी डेट। तो यूजुअली ऑप्शन में या फ्यूचर्स में हम देखते हैं तो देर आर थ्री कॉन्करेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है? तो देर आर थ्री कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम कहते हैं करंट मंथ। सो वी से दैट इट इज अ करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी का करंट मंथ जो है एनएससी का, वो होगा थर्सडे को, दैट इज नेक्स्ट वीक। सो वी से दैट इट इज अ करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट। तो करंट मंथ के बाद क्या होता है, नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद होता है फार्म। तो यूजुअली फॉर ऑल futures instruments, or for that matter option instrument, you can have three concurrent month contracts: near month, next month और far month. Okay, so चलो मैं आपको इसको दिखाता हूँ एनएससी की वेबसाइट पे। राइट, सो नाउ what you are seeing on your screen is an options view. So this is basically options है, futures में भी सिमिलर होगा। तो देखिए, ये जो है, दिस इज द वैल्यू फॉर द करंट मंथ। ये कभी इससे ऊपर क्या लिखा है, एक्सपायरी डेट। तो ऊपर क्या लिखा है, एक्सपायरी डेट। तो ये जो वैल्यूज है, दे विल बी वैलिड ओनली टिल जनवरी, टिल जून 26। उसके बाद न तो ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, न तो ये भाव रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है? तो एक्सपायर मतलब हिंदी में ट्रांसलेशन, ये कॉन्ट्रैक्ट अपना दम तोड़ देगा, आखिरी सांस लेगा, एंड इट विल बी ओवर एट 3:30। दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी ओवर। फिर आएगा 31 जुलाई, उसके बाद 28 अगस्त। ठीक है? सो दिस इज फॉर इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं निफ्टी के बारे में बात करता हूँ, सो निफ्टी कैन हैव लॉट मेनी, देयर इज समथिंग कॉल्ड लीप्स आल्सो, बट इट इज ओके। बट एनीवेज, फॉर द टाइम बीइंग, सी दिस इज निफ्टी। देखो निफ्टी में कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। देखो दिसंबर 2029 तक की है। ठीक है? तो निफ्टी कैन हैव कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम करंट, फ्रॉम द करंट मंथ, राइट, फॉर कपल ऑफ इयर्स। तो जो 3 महीने, 4 महीने, 1 साल के बाद ऊपर रखते हैं उसको लीव्स कहते हैं। एनीवेज, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। बट आपकी जानकारी के लिए, निफ्टी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है दैट विल बी अवेलेबल फॉर सेवरल इयर्स। So even for that matter, Bank Nifty, it is available till March 2026. Okay? तो इक्विटी में 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और आपके इक्विटी स्टॉक्स में इट इज ओनली फॉर 3 कॉन्करेंट मंथ्स। जैसे ही आपका जून खत्म हो जाएगा, नया मंथ शुरू होगा, तो आपको अगस्त के बाद सितंबर की भी वैल्यूज आपको दिखेंगी। सो राइट, सो दिस इज समथिंग ऑन फ्यूचर्स।
ओके, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात किया। फोर्थ वन इज स्वॉप्स। स्वॉप्स, अगर दिस इज ऑल्सो अ टर्म दैट इज दैट वी डोंट यूज इट, हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स में यूज नहीं होता है। तो स्वॉप्स, हम स्वॉप्स मतलब जब भी आपका कोई भी कैश फ्लो चेन है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका कार लोन, राइट? तो आपका कार लोन है, आपने 5 साल का लोन लिया है, 2 साल खत्म हो गया है, 3 साल और बाकी है। कभी आपको कोई बैंक वाला आके बोलता है कि सर हम आपको बेटर इंटरेस्ट रेट देंगे, आप हमारे थ्रू ये लोन ले। तो बैंक क्या करेगा, वो बैंक पुराना लोन आपका जो है वो रीपे कर देगा, और आप बैंक को एक अलग तरीके से एक उसमें आप बैंक्स को, दूसरी एक बैंक को अलग टाइप का कैश को शुरू करेंगे। सो दैट इज बेसिकली अ स्वैप, बट वी आर नॉट रियली कंसर्न विद स्वैप। आज के टॉपिक में आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस के बारे में। ठीक है, सो बेसिकली नाउ डेरिवेटिव समझ गए, व्हाट वी हैव अंडरस्टूड द बेसिक्स ऑफ व्हाट इज मेंट बाय एक्सपायरी। सो नाउ लेट्स गो, अभी हम जाएंगे व्हाट इज मेंट बाय ऑप्शंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज मेंट बाय ऑप्शंस। लेट्स गो बैक टू द स्लाइड। तो हम फिर जाएंगे स्लाइड पे, राइट? सो नाउ व्हाट आर ऑप्शंस? सी देखो, ऑप्शंस में, ऑप्शंस गिव्स यू अ राइट। ओके, फॉर एक सेकंड के लिए ऑप्शंस को बाहर साइड पर रखो। मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो, राइट? यू आर बाइंग सम प्रॉपर्टी, यू हैव लाइक वन प्रॉपर्टी। तो आप सबसे पहले हम क्या देते हैं, हम अर्नेस्ट मनी देते हैं, हम पाना का पैसा देते हैं। ओके, अलग अलग चीज अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं अर्नेस्ट मनी। सो राइट, सो व्हाट वी से दैट दिस इज एन अर्नेस्ट। राइट, तो वी से दैट इट इज अर्नेस्ट मनी। तो अर्नेस्ट मनी पे क्या होता है, जब आपने कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो तो आपको एक टोकन अमाउंट देना पड़ता है कि आप ये रिजर्व कर लो। और ये बहुत सारी चीज में होता है ना, आपने कुछ एडवांस दे दिया। अगर आपने वो प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आपका फाइनल पेमेंट के साथ वो एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप कहते हो कि अगर मुझे नहीं चाहिए, ये प्रॉपर्टी मुझे नहीं चाहिए, तो क्या होगा, आपने जो एडवांस पेमेंट किया है या आपने जो अर्नेस्ट मनी दिया है वो फॉरफिट हो गया। तो जो बायर बोलेगा, जो जो आपको बेच रहा है वो कहेगा कि भाई आपने तो मना कर दिया, ये जो प्रीमियम दिया है आप, ये अभी मैं आपको नहीं दूंगा, लेकिन आपको प्रॉपर्टी लेने की जरूरत नहीं है। यू आर नॉट लीगली बाउंड टू टेक द प्रॉपर्टी। अभी ये प्रॉपर्टी की डिलीवरी आपको लेनी जरूरी नहीं है। समझ गए? सो व्हाट इज इन दिस केस, व्हाट इज, सो एज अ बायर, एज अ बायर ऑफ द ऑप्शन, क्या हुआ कि आपने प्रॉपर्टी में सिर्फ एक छोटा सा रिस्क लिया, आपने एडवांस पेमेंट दे दिया, उसको पाना का पैसा दे दिया, और आपने कहा कि अगर मैं इसका डिलीवरी नहीं लेता हूं, आई एम विलिंग टू फॉरगो दिस प्रीमियम। सो नाउ व्हाट हैपेंस, इफ यू टेक द डिलीवरी, यस डेफिनेटली यू विल गेट द प्रॉपर्टी, बट इफ यू डोंट टेक द प्रॉपर्टी, आप बोलते हो मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तो आपका वो छोटा सा जो प्रीमियम दिया था अपने अमाउंट का, दैट इज फॉरफिटेड। तो ऑप्शंस क्या करता है, ऑप्शन गिव्स यू द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। आपको डिलीवरी लेने का हक मिलता है, बट यू आर नॉट ऑब्लाइज, आपको जरूरी नहीं है कि आपको वो एसेट लेना ही है। सो इन दिस केस इट इज कॉल ऑप्शन। जब भी आपने कॉल्स लिए है, उसका मतलब ये होता है कि आपके पास राइट है, बट यू आर नॉट ऑब्लिगेटेड, राइट? तो उसका बिल्कुल विपरीत क्या होता है, सेल ऑप्शन। सेल, या हम कहते हैं पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन क्या करता है कि आपको राइट देता है
उसकी डिलीवरी बेचने का, उसकी डिलीवरी, वो चीज की डिलीवरी आपने, आपको देने का अधिकार है, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं। ठीक है, तो नाउ, so you have a right but you don't have the obligation, but India is slightly different. I will just talk about something that is prevalent in uh, uh, our industry, or rather in on NSE or BSE. So right, so now the price is called as the premium. जब भी हम ये प्राइस देते हैं तो उसको कहते हैं प्रीमियम, एंड इट इज पेड बाय बायर ऑफ एन ऑप्शन टू द सेलर। सेलर का दूसरा नाम है राइटर ऑफ द ऑप्शन। देखिए, किसी भी चीज में आपको बायर और सेलर चाहिए। तो कैश मार्केट में क्या होता है, जब भी आप बाय करते हो आपको डिलीवरी लेना जरूरी है, राइट, यू हैव टू टेक द डिलीवरी। लेकिन ऑप्शंस मार्केट में क्या है कि अगर आप कॉल बाय करते हो तो आपको डिलीवरी लेना जरूरी नहीं है, राइट। सो यू कैन फॉरगो। सो इसका मतलब क्या होता है, लेट्स से, लेट्स गो टू एनएससी का ऑप्शन चेन अगर। तो लेट्स से अभी मेरे पास ये है, पिक अप अ रैंडम एग्जांपल, लेट्स से अडानी। सो नाउ आई हैव दिस, नाउ वी हैव an option chain of अडानी इंटरनेशनल इज द अंडरलाइन। तो शेयर का नाम क्या है, इट इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द शेयर, इट इज अडानी। तो नाउ व्हाट वी हैव हियर इज एन ऑप्शन चेन। देखिए करंट प्राइस क्या है, 2414। नाउ सपोजिंग इफ आई बाय अडानी एट 2400, तो नाउ आई एम पेइंग अ प्रीमियम ऑफ 50 रुपीज। अगर आज मैं बाय करता हूं, मान लीजिए ये प्राइस 2414 है, मैंने 2400 का मैंने कॉल लिया है 50 में, और अगर इसका भाव लेट्स से नेक्स्ट 5 दिन में 2480 हो जाता है, सो नाउ व्हाट हैपन, सो आई एम पेइंग 2400 प्लस 50, दैट इज 2450। द क्लोजिंग प्राइस इज 2480। ओके, तो एट द एंड ऑफ एक्सपायरी क्लोजिंग प्राइस क्या आ रहा है, 2480। नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन आस्क फॉर डिलीवरी। भाई मेरे को 2400 का डिलीवरी, 2400 पे मुझे डिलीवरी चाहिए, आई हैव अ राइट टू आस्क। ओके, तो मुझे क्या होगा, एट द एंड ऑफ एक्सपायरी आई हैव 2400 इंटू 3 lakhs इंटू 300, शायद ये जो है 300, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट साइज। सो 300 इंटू 2400, सो इट इज 7200। तो 7,20,000 रुपया देके मेरे को 300 रुपए का डिलीवरी आ जाएगा। और डिलीवरी का प्राइस कितना होगा, व्हाट विल आई गेट इट एट द प्राइस ऑफ 2400। तो ये प्रीमियम क्या हो जाएगा, ये प्रीमियम विल गो टू द सेलर। सो नाउ व्हाट विल आई डू, couple of things, अगर ये 2480 है, what I can do is that I can sell this delivery at 2480 in the cash market, right? So this is the basics of options. If you are a buyer, this is the basics कि आपको ये अगर, तो ये आपका प्राइस जो है वो प्रॉफिट में एक्सपायरी ये हुआ है, आपको इस ट्रेड पे प्रॉफिट मिला है। सो अगर आप
मान लिए 24 जून को जब भी एक्सपायर हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, जब भी आप लेने के लिए जाओगे, सो यू विल हैव टू पे 2480. व्हाई? बिकॉज दैट इज द प्राइस ऑन 26 जून. तो 26 जून को प्राइस क्या है? 2480. अगर आपको 24 जून को लेने के लिए जाओगे, यू विल हैव टू पे 2480. बट अगर आपने आज लिया है, यू हैव पेड अ प्रीमियम ऑफ 50. सो नाउ यू हैव अ राइट टू बाय. लेट अस से, नाउ लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल. मान लीजिए आपने खरी इसका ट्रेड लिया है अडानी का, दैट इज एट 2414. सो आपने लिया है ट्रेड 2480. 2480 में यू हैव पेड लेट्स से 16 रुपीज फॉर द ट्रेड. 2414, लेट्स से यू हैव बॉट 2400 कॉन्ट्रैक्ट एट 50 रुपीज. यू हैव पेड द प्रीमियम, राइट? अगर ये भाव नेक्स्ट एक्सपायरी तक 26 जून तक, ये जो है अभी की करंट प्राइस क्या है? 2414. तो ये 2414 जो है, दिस प्राइस comes down to 2360. ये 2360 आ जाता है. आपने लिया है अडानी का जैसे 2380 का आपने कॉल लिया है. यू हैव पेड 61 रुपीज फॉर दिस. प्राइसेस कम डाउन टू 2360. ओके. अगर आप डिलीवरी लेते हैं तो आपको कितना देना पड़ेगा? 2380, बिकॉज ये आपने ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट लिया है. So now, does it make sense to buy something at 2380 when the current price is at 2360? तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप इसको एक्सपायर, आपका कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होने दोगे. आप बोलेगा मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको एक्सपायर होने दूंगा. आप इसको एग्जिट कर दोगे बिफोर द क्लोज ऑफ द मार्केट ऑन 26 June. Okay. Why? Because I am getting this stock at 2360, then why should I pay 2380 for this? Okay, right? समझ गए? Is everybody clear about this buying of options? You have you have a right but not the obligation. समझ गए? Has everybody got this? Please reply on chat. So now, अभी सेबी अभी इंडिया में क्या कहता है, देखिए इंडिया में क्या हो जाता है. इंडिया में अभी सेबी के रूल्स के हिसाब से, अगर आपका ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सपायरिंग इन द मनी, अगर एक्सपायर होता है इन द मनी, देन अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ नहीं किया तो आपको कंपल्सरी डिलीवरी लेना पड़ेगा. ठीक है? तो एक्सचेंज क्या बोलेगा? आपको कंपलसरी डिलीवरी लाए. ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने कोई किसी, देखिए काफी लोग फंस जाते हैं. दैट इज व्हाट हैपेंस कि अरे ये 2300, आप मान लीजिए कि आपने लेट्स से आपने कोई लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल. आई जस्ट एक्सप्लेन. अभी इसमें क्या हो सकता है, व्हाट कैन गो रॉन्ग एट टाइम फॉर पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड हाउ ऑप्शंस आर सेटल्ड. ठीक है?
Let's say, for example, I am talking about something called as an AU bank. AU बैंक, मान लीजिए आपने AU बैंक लिया था 710 में ऑन द बिगिनिंग ऑफ दिस मंथ. ओके, 710 का प्राइस था, आपने 690 का लेट्स से कॉल लिया. ठीक है, नाउ दिस इज डीप इन द मनी. इफ यू डोंट एक्सरसाइज दिस, अगर आपने इसको स्क्वायर ऑफ नहीं किया, तो सेबी क्या बोलेगा, आपने जो लिया है 690 का कॉल, दैट इज एक्सपायरिंग इन द मनी. सो नाउ यू हैव टू कंपल्सरीली टेक डिलीवरी ऑफ दिस. आपको अगर चाहिए या नहीं चाहिए, यू विल हैव टू टेक कंपल्सरी डिलीवरी. जो आपका ब्रोकर्स है, दे हैव अ राइट टू चार्ज एक्सेस मार्जिन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके, सो अगर आपका ऑप्शंस है, अगर आपका ऑप्शंस कोई ट्रेड है, एक्सपायरी का दिन है, खास ध्यान रखिए कि ये ऑप्शन इन द मनी एक्सपायर हो रहा है कि नहीं. विल टॉक समथिंग ऑन इन द मनी लेटर ऑन. बट ओके, प्रॉफिट है या लॉस है, दैट इज इमटेरियल. सो लेट्स से इफ यू आर लुकिंग एट AU बैंक, तो अगर आप करंट में भी लेते हो, अगर आप 790, अगर आप 770 का कॉल आज भी लेते हो और ये 790 को एक्सपायर होता है, तो आप इसे छोड़ नहीं सकते. आपको ये कंपलसरी स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इसको मैं एक्सपायर होने दूंगा. इफ इट इज एक्सपायरिंग इन द मनी, आपको डिलीवरी जबरदस्ती लेनी पड़ सकती है. Yeah, we'll talk about that. Rajesh. Yes, Tanuji, please hold on. Yes, Punitji, you are right. Even if that contract price, no, contract price in, yes, it will get allocated to demat account. Hari Krishna ji, I don't have the links. You will have to get in touch with the organizers. Yes, it will. Delivery means that it will get allocated to demat, and you will have to pay uh, the charge for this. I mean, charge in the sense the delivery amount. Okay, that's good. Okay, so in case of put options, yes, you can. Can we sell next day after delivery? Yes. Once it gets credited into your account, you can sell it the next day, or that's more. Okay. Put is exactly the opposite. So put options, see, these are call options. So, and these are put options. Okay. So we'll talk more about call and put. Let's go back to the slide. No, delivery nahi, Nifty में नहीं. Okay. Harish Kumar ji, Nifty is cash settled. Nifty and indices, they are cash settled. तो उसमें कोई delivery नहीं हो. How much will be the charge for delivery? It will be the price of it will be the contract value जो भी है. तो in case of let's say ये कौन सा stock है? This is AU Bank. उसका lot size is 1000. 6680 में अगर आपका डिलीवरी आता है, तो जो भी होता है मल्टीप्लाइड बाय, तो 6,80,000 रुपये. अगर ये ले तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द स्ट्राइक. So we'll talk more about this as we go on. What is meant by strike and this. So indices, they are cash settled. Indices जो है, they are cash settled. Yes, premium is already paid. You have already paid. तो आपका cost उतना बढ़ जाएगा. You have already paid the premium, right? At the time of entering the contract, you have paid the premium. अमित जिंदाल जी का कहता है कि it is plus premium. You have already paid the premium. Okay.
Let's move on. So now we have just talked about calls. Right. So call options. So what are, now we'll come to key terminology. So what are put options? Put options are exactly the opposite. तो मान लीजिए, तो जब भी आप पुट लेते हो तो उसका मतलब क्या होता है कि यू एक्सपेक्ट द प्राइसेस टू कम डाउन. ठीक है. सो नाउ एक बहुत ही सिंपल है, एक सिंपल सी एक बात करें तो यू बाय अ कॉल. सो वील ओनली टॉक अबाउट बाइंग. सो यू बाय अ कॉल when you think the prices are likely to go up. Okay. You buy a put. आप put कभी लोगे when you expect the prices to go down. ठीक है. ये बहुत समझ सीखना. ओके. वेरी सिंपल. अगर आपको लगता है कि मार्केट यहां से नीचे आएगा, स्टॉक इधर से नीचे आएगा, यू कैन बाय अ पुट, यू कैन बाय अ कॉल, यू कैन बाय अ पुट. ओके. नाउ तो सवाल ये आता है कि लोग सिर्फ ऑप्शन में क्यों ज्यादा ट्रेड. देखिए, अगर हमको डिलीवरी है तो हम और भी इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड कर सकते हैं, हम एमटीएफ में भी ट्रेड कर सकते हैं. हम सी द क्वेश्चन इज दैट योर एबिलिटी टू लीवरेज. ओके. देखिए, फॉर एग्जांपल इफ आई एम, देखिए ये, लेट्स गो बैक टू एयू बैंक का एग्जांपल. तो लोग इतना, व्हाई डू पीपल ट्रेड और लॉट इन ऑप्शंस, बहुत ज्यादा ऑप्शन में ट्रेड क्यों करते हैं. देखिए, जब भी आप फ्यूचर्स में लेते हो तो आपको मार्जिन देना पड़ता है. ठीक है. तो मार्जिन मान लीजिए मोटा मोटी यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 20% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू. तो अगर लेट्स से समथिंग लाइक एयू बैंक, अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो है 789, मान लीजिए 800, और 1000 का उसका लॉट साइज है, तो 8 लाख हो गया. 8 लाख पे 20 टका, तो 1,60,000 रुपया आपको देना पड़ेगा फ्यूचर्स के लेने के लिए. बट नाउ इफ आई एम बाइंग एन ऑप्शन, अगर मैं ऑप्शन ले रहा हूं, मान लीजिए मैं 790 का या 800 का मैं ऑप्शन ले रहा हूं. ओके. आज के दिन पे तो मुझे कितना देना पड़ेगा. अगर 830 का मैं 800 रुपए का कॉल लेता हूं, आई विल ओनली हैव टू पे 8,000 और राइट, 8,400 रुपया मेरे को देना पड़ेगा. समझ गया आप. अगर मैं फ्यूचर्स लेता हूं, ओके, अगर मैं फ्यूचर्स लेता हूं तो मुझे मार्जिन देना पड़ेगा. इट इज रफली अराउंड 20% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू. इफ आई एम बाइंग ऑप्शंस, ओके, if I am buying options, I only have to pay the premium. Okay. अगर प्राइस अगर मेरी फेवर में नहीं जाता है तो मैक्स आई कैन यूज इज द प्रीमियम. आई यू विथ मी, आई यू विथ मी, आई यू विथ मी. प्लीज यूज अ रेड पेन. Get this color. I will use a red. ठीक है. आई यू विथ मी.
मनीष कुमार जी, आपका आपका जो कैलकुलेशन है, या इनटू 75 शेयर्स, या सो इन, अच्छा निफ्टी इज कैश सेटल, तो यू कैन रिप्लेस निफ्टी बाय, तो हरीश कुमार जी का ये सवाल, yes, Raman Grover ji, yes, you just have to pay the premium on the quantity purchase and not the whole value of the price. You just have to pay the premium. So premium into the lot size, right? So premium into the lot size. So this is what draws, okay, this is what draws so many people into options. Because now what happens? See, अगर मान लीजिए, मान लीजिए if एयू बैंक, ओके, 790 से लेके, इफ 790 एयू बैंक अगर 790 से, अभी इसका प्राइस क्या है, लेट्स से 790, इट इज एट 790, लेट्स से 780, 790, दिस इज द नियरेस्ट एट द मनी स्ट्राइक, तो 790 इज एट 13 रुपीज, 800 का प्रीमियम है 8 रुपीज 40, अगर 8 रुपीज 40 है, नाउ समथिंग हैपन्स, ओके, एयू बैंक goes from 790, let's say, to 830, मैंने ले लिया है 8 रुपीज 30 पैसे में 800 रुपए का कॉल, मैंने लिया है 800 का कॉल एट 8 रुपीज 30, इफ प्राइसेस गो अप टू 830, मान लीजिए 26 को अगर इसका एयू बैंक का क्लोज प्राइस आता है 830, दिस प्रीमियम विल गो फ्रॉम 840 टू हाउ मच, इट विल बी एट 30 टुवर्ड्स द एंड ऑफ एक्सपायर, तो मेरा कितना हो गया, ये 4 गुना पैसा हो गया इन अ मैटर ऑफ 1 वीक. The it is an if, but please don't trade AU Bank tomorrow. I am not saying that it is likely to go to 830. I am just giving you an example. Okay. So what is, so then what happens? What is the gain that you will make? You will make a gain of 400% at the end of expiry in less than 5 days, maybe 6 days. चलो गुरुवार को है आज. Okay. So in 6 days you will make 400%. दिस इज व्हाट अट्रैक्ट्स पीपल टू ऑप्शन. तो अभी लोग क्या सोचते हैं कि अरे 8 रुपया 30 पैसा गया तो कितना जाएगा, 8,000, अगर मिलेगा तो कितना, 30,000 या 30. आई विथ मी, आप समझ रहे हो व्हाट अट्रैक्ट्स पीपल, retail traders to options? It is this ability to, in percentage terms, it can give you a major outsized return on your investment. आपके इन्वेस्टमेंट पे एक बहुत आउटसाइज, सुपर आउटसाइज रिटर्न मिलने के प्रोबेबिलिटीज है, चांसेस है. बट अगेन द क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एयू बैंक गोइंग टू 830. तो लोग इसी में काफी एंड ऑफ एक्सपायरी डे पे ट्रेड करते हैं. वी हैव सीन लॉट ऑफ ट्रेडिंग हैपनिंग in expiry on the expiry date. It is because of this. तो लोग 50 पैसे का भी ऐसा हुआ है, 1 रुपया 2 रुपए का भी निफ्टी का ऑप्शन है क्लोज्ड एट 70, 80, 100 ऑन एक्सपायरी डेट. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. माय सजेशन टू यू इज दैट अगर आपको निफ्टी के हिस्टोरिकल डेटा मिलता है, प्लीज गो थ्रू दैट टू अंडरस्टैंड. ठीक है, right? So this is something on buying of options. So हमने buying of options either call or put. Okay, it is just an
mirror image. Okay. Agar current price of AU Bank is at 789 and I am, let's say I am buying 780 cup put. Okay. Suppose I am buying a 780 cup put. Okay. From 790 तो ये है 7 रुपया 30 पैसे. अगर price does not go below 780 minus the premium, I will be a loser. But supposing something happens and price goes to 750, okay, almost 33%, 3% move is not a very 3.5% move in 4 or 5 days is not much. Okay, if something happens, if this goes to 750 at the end of expiry, this premium would be this premium would be roughly around 30 rupees. Okay. So साथ में लेके I will get 300, 400 percentage on investment. But it is a very, very low probability trade unless and until you are, uh, you know, unless and until you are a real pro at it, you understand how the markets are behaving both on intraday as well as short-term swings. Only then this sort of trades will work for you. Randomly, आपका ये trade, if you choose, it may or may not work. See, the price move can also happen in last, half an hour or so. Just in case you have bought an options contract and prices, even if it expires slightly in the money, then also you may end up taking delivery. Okay. तो ये भी ध्यान रखिए. Don't wait till the last moment to square off your positions. Okay. So which is the best option by your opinion? Now we are not talking about short straddles. We are not talking about uh, vertical spreads today. We are only talking about basic. Which is the best option buy or which option sell? It really depends on the point of view. Tamit Agarwal ji. बेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है. कौन सा स्टॉक आप सिलेक्ट कर रहे हो? See, everything depends on the end. How many days you have till expiry? What is the underlying? आप किस तरीके से अपने ट्रेड को मैनेज करते हो? अगर आप डिलीवरी भी लेते हो, आप अगर आप डिलीवरी भी प्ले करते हो, अगर आप ऑप्शन भी प्ले करते हो, then it can get pretty complex as it goes along. Okay, so best buy options and this is okay. So best option buy, that depends. It really will change from day to day basis, depending on the market का movement क्या है, volatility क्या है, so on and so forth. Okay. So let's understand key terminologies. Underlying price जो मैंने आपको दिखाया. Okay. So we are just talking about underlying price. That is the price of the underlying. In case of AU Bank, it is 789. तो ये आपका underlying price है. Lot size is something that is determined by the exchange. Change भी हो सकता है. So in this case of AU Bank, your lot size is around 1,000 shares. Okay. Margin. Okay. Now what is margin? Okay. Now we are talking about uh, certain terminology. Okay. Now, if you uh, if you are a buyer of options and if you take your trades in last 1 or 2 days, your broker may ask for more margin. Okay. Then besides the options premium. Okay. It depends on broker to broker, but they may ask for 20% margin on the trade that you have taken. तो अगर हम इसी की बात कर रहे हैं, तो अगर आपने 700 एंड मान लीजिए 780 का कॉल्स लिया है आपने, तो आपका 19,000 रुपए का जो प्रीमियम आता है,
आपको ब्रोकर ये कह सकता है कि भाई मुझे, अगर आपने लास्ट 1 और 2 डेज में या 3 दिन में ट्रेड लेते हो, देन यू प्लीज गिव अस एडिशनल मार्जिन ऑन दिस ऑल्सो, इट मे बी 10%, 15% और वट एवर। इफ यू आर अ सेलर ऑफ एन ऑप्शन, देखिए, अगर आपने ऑप्शंस बाय किया है, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो क्या हो जाएगा, देन व्हाट हैपन, ऑप्शन सेलर में क्या हो जाएगा, ही विल गेट टू कीप द प्रीमियम। ओके, तो ये प्रीमियम जो है, लेट्स से 780 है। okay? तो मान लीजिए ऑप्शन सेलर, अगर इफ ही इज सेलिंग ऑप्शन, अगर आप बाय कर रहे हो, आपको अगर कोई सामने सेल कर रहा है, ओके, देन ही विल गेट टू कीप द प्रीमियम। तो जो प्रीमियम है, मतलब मान लीजिए अगर किसी ने 800 रुपये में अगर आप बाय कर रहे हो, अगर कॉल का प्राइस 800 के नीचे बंद होता है, तो ऑप्शन सेलर ही विल गेट टू कीप दिस प्रीमियम, तो ये उसका प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन इसमें कैच क्या है, इसमें कैच ये है कि अगर प्राइस शूट अप होता है तो ऑप्शन सेलर का जो रिस्क होता है वो अनलिमिटेड होगा। That risk becomes unlimited. So when we talk about payoff charts, we talk more about this. तो मार्जिन, हैव यू गॉट दिस नोशन ऑफ मार्जिन, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपका फ्यूचर्स का मार्जिन लगेगा आपको। ओके, यू विल गेट टू कीप द प्रीमियम, और आपको जो मार्जिन लगेगा वो फ्यूचर्स का लगेगा, दैट इज रफली अराउंड 20% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या है आपका, इट मीन्स, okay, it is the price into 790 into whatever 1000, उसका 20, roughly around 20%. It may change, depending on the strike, it may change. तो उसके लिए options का margin calculator है. Okay, you will find this online. You can just go and play around with what is called as options margin calculator. Right? So I've just had some water. Right? How does trading for a particular stock option on the day of the expiry function if we are supposed to? No, you are not supposed to book shares in advance. You are just buying a contract. You are not booking any share. अगर price is expiring in your favor, only then you may take delivery. If it is not, Raman Grover जी का ये प्रश्न है, how does trading for particular stock option on the day of the expiry function if you are supposed to book the shares in advance? You are not booking the shares in advance. If prices go in, okay, okay. If prices go in your favor, only then, uh, only then you will have to take delivery. Okay. Tanuj, agar very few people who are, yeah, into, we get in YouTube Shorts, Purit ji, this is, see, let's put it this way. Now, if I am a buyer of the option, okay, if I am, see, I can buy a call option or I can buy a put option. Okay, chalo, I'll just rephrase. Okay, I can buy a call option or I can buy a put option. I will buy a call option only when I expect the prices to go up. Okay. I can, I will buy, I am a buyer. See, I am talking from the point of view of a buyer. If my expectation is that the prices will decline, okay, if my expectation is that the prices will decline, what will I do? I can buy a put option. अगर मुझे लग रहा है कि प्राइस एजी की तरफ आ सकता है, देन आई विल बाय
अ कॉल ऑप्शन। अगर मुझे लग रहा है कि प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे आने वाला है, तो आई कैन बाय अ पुट ऑप्शन, बट इट इज ओनली फॉर द कॉन्ट्रैक्ट मंथ जो भी है वो। अगर प्राइस मैं बाय करता हूँ और ऊपर नहीं जाता, इफ आई एम बाइंग एंड द प्राइस डज नॉट गो अप, आई विल ओनली लूज द प्रीमियम, राइट? आई विल okay, separately I will just come to your question. Now, what I can do is I can sell an option. Okay, अगर मुझे लग रहा है कि यहां से, अगर मुझे लग रहा है कि प्राइस 800, ओके, 789 है, if I think that the prices will not go above 800 before the expiry, I can also sell a call. तो मैं ये कॉल बेच सकता हूँ। सी, अंडरस्टैंड वन थिंग कि सेलर ऑफ अ कॉल ऑप्शन, ओके, seller of a call option will get to keep the premium. Okay, buyer of the option will have to pay the premium, तो उसके लिए कॉस्ट होता है, और सेलर के लिए वो इनकम होता है। okay? ठीक है। So somebody was saying that you will make money 70% of the times if you are a seller of the option. But अगर शार्प मूव आता है आपके अगेंस्ट में, अगर शार्प मूव आता है, अगर 800 का आपने कॉल, मान लीजिए 800 का कॉल आपने बेचा है, price is at 790, something happens and the price expires at 830, you will end up losing what you have received minus the price appreciation. Okay, तो आपने 800 माइनस 30, तो ये जो है वो 800 है, that will start to trade at 830। आठ 830 है, this will go up to 300, so you might end up losing 22,000 rupees per contract. Okay, sellers will make money in very very small increments. Okay, ज्यादातर लोग सेलिंग में कमाते हैं, मे बी यू आर राइट, इट इज पॉसिबल, लेकिन अगर आपके पास डिलीवरी है शेयर्स का, ओनली देन यू कैन लुक टू सेल ऑप्शन। सेलिंग ऑप्शन प्राइसेस नेकेड इन अ राइजिंग मार्केट, अगर राइजिंग मार्केट है तो यू कैन बी अ सेलर ऑफ पुट ऑप्शन बिकॉज द ओवरऑल प्राइसेस आर गोइंग अप। ठीक है, राइट, समझ गए? सी, अगर सेपरेट है, सेव अप रहता है। अच्छा, हाउ प्रॉफिट एंड लॉस विल बी कैलकुलेटेड, we'll talk about identifying a trend, we'll talk about this, how to identify what is the current trend, direction of the trend, candlesticks का chart आप देख सकते हो। there are different ways to do it, you can buy on breakouts, you can go, okay। so आज ये है ना, we are only going to talk about option, basics of option। ठीक है, तो ये देखो सुब्रता जी का ये सवाल है कि हाउ प्रॉफिट एंड लॉस विल बी कैलकुलेटेड इन द स्क्वायर ऑफ द ऑप्शन बिफोर द एक्सपायरी डेट। तो आप, इट विल बी, लेट्स से अगर 800 का प्राइस है, टुमारो एयू बैंक गोज अप फ्रॉम 890, 790, ये देखो 789 है, इफ इट गोज अप लेट्स से बाय 10 रुपीज टुमारो, दिस ऑप्शन प्रीमियम जो है, okay, this option premium will go up probably by 1 rupee। ये जो ऑप्शन प्रीमियम है, इट विल जस्ट गो अप मार्जिनली। तो आपने अगर 840 में लिया है, प्राइसेस गो अप टू लेट्स से 800 इन द कैश मार्केट, इन दिस केस इन योर ऑप्शन विल राइज इन वैल्यू, आपका ऑप्शन का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, एंड ओके, एंड यू विल मेक अप अ स्मॉल प्रॉफिट। तो आप
Okay, so what you can do is this: if you are buying at 830, let's say, okay, current price is at, let's say, 790, तो आपने ये लिया है 840 में. Tomorrow the price close is at, let's say, 812. मान लीजिए दिस इज टुमारोज क्लोज. ये जो है 8 रुपीज 30 पैसे, इट विल प्रोबेबली गो अप बाय 1 or 2 रुपीज. तो ये 9.5 या 10 रुपए का भाव आ सकता है. सो यू कैन स्क्वेयर इट ऑफ जस्ट लाइक एनी अदर स्टॉक. ठीक है. तनु जी प्लीज. Multiple indicators, there are many. We are not talking about indicators today. I think next session we are planning probably in July, jahan pe we'll talk about something on indicators and so on. So you please attend that session whenever it is announced, and I will clarify more on this. So you can use candlestick patterns to identify trades. You can use something, basic indicators and so on. वो कर सकते हैं. We do it day in and day out. So it is possible to have a higher probability trade, but हम आज इसके बारे में बात नहीं कर रहे. We are only talking about basic understanding of options. ठीक है. Okay? Right. So what we have done is that we have talked about underlying price, lot size, margin, option chain. What you are seeing is multiple price, option chain, option premium. This is what we have talked about. Settlement also we have talked about. Exercising of an option is also something. Exercises मतलब आप अपना राइट को एग्जीक्यूट कर रहे हो कि हाँ मुझे डिलीवरी चाहिए. आप उसको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मार्केट आप इसको स्क्वायर ऑफ नहीं कर रहे हो. Right. Now we'll talk some more terminologies. Volumes. Okay. Volumes क्या है? Volumes means this is अभी somebody was. Now we'll talk something on volume and open interest. पर्सनली मैं ओपन इंटरेस्ट का डेटा को उतना ज्यादा महत्व नहीं देता हूँ जितना लोग देते हैं, खास करके जो भी वट एवर प्लेन इन्फ्लुएंस दे आर टॉकिंग अबाउट. तो वी जस्ट गो बैक टू आर. So we have, see, this is volume. तो फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट आज के दिन में 7,620 कॉन्ट्रैक्ट फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट, राइट. फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट 7,619 contracts have been traded. So this is the volume. तो वॉल्यूम क्या है? इट इज द टोटल नंबर ऑफ बाय एंड सेल्स ऑन एनी गिवन डे. तो ऑप्शंस में अगर किसी ने लिया है तो इट विल बी तो दैट इज कैलकुलेटेड एज वॉल्यूम फॉर द डे. ओपन इंटरेस्ट क्या है? देखिए अगेन दिस इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर. ओपन इंटरेस्ट, ओके, ओपन इंटरेस्ट इज नथिंग बट द टोटल आउटस्टैंडिंग पोजिशन, ओके, जो स्क्वायर ऑफ नहीं हुए. ओके, मतलब फॉर 800 contracts you have 1043 contracts that are not closed, they are total open position. तो इसमें शायद ऐसा भी हो सकता है कि एक 25-50 ट्रेडर हो इसमें 1443 कॉन्ट्रैक्ट्स में. so so this is something on open interest, volume and open interest. So when you see लोग सो काफी लोग ओपन इंटरेस्ट का मूवमेंट को भी ट्रैक करते हैं, वॉल्यूम्स का मूवमेंट को भी ट्रैक करते हैं. पर्सनली आई डोंट अटैच
so much importance to it. Uh, Looking at volume and open interest can also be a topic by itself. But suffice it to say कि volumes are total number of contracts that have traded during the day. Okay. Highest volume is on 7619 का strike price पे. So these are strike prices. आप कोई भी strike price पे आप trade कर सकते हो depending on what your view is. Okay. So uh, so you can अगर नया पोजीशन सी नाउ यूजुअली क्या होता है कि अगर ऑप्शन ओ आई लेट्स से ओ Manish, आई गोज अप फ्रॉम ये फ्यूचर्स में भी काफी यूज होता है सी इफ प्राइस गोज अप फ्रॉम लेट्स से 7 Manish, can you hear me? 8 या If you can give an example with the chart and practical, I think it will be सॉरी more हेलो convenient for. हेलो If you can give a demo with a chart and या in ओके the ठीक practical है contract, ओके that will be ठीक है more convenient to understand. लेट्स ओपन इंटरेस्ट विल ओनली बी अवेलेबल ऑन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का बट यूजुअली अगर आप ओपन इंटरेस्ट का स्टडी करते हो then you should do it on futures. Options can be very, very complex. Now, see, this is futures continuation contract. Now, see, volumes, these are volumes, and we can add open interest to it. Yeah. Usually, open interest is shown as continuous line. Now, this is as per uh, the contract. See, now what you are seeing is that there is a slight deterioration in open interest. The prices are going. Still, I don't consider this to be a very dependable indicator. There are people who who swear by open interest, but these are the total outstanding contracts at the end of the day. So ये contracts close होने जाने. So there are times when there are studies that are dedicated to open interest, but that again by itself is a very very uh, separate subject by itself. But open interest is nothing but it is the net outstanding positions at the end of the day or at the end of a period. Okay. So now I'm just showing you a slide. You can maybe just take a picture of this. Price rising. Okay. Now price rising, open in volume rising, open interest rising, market is strong. Okay. So you can expect the markets to go higher. Market is again, yeah, this has to be taken with a pinch of salt, very, very theoretical. Okay. Price rising, volume is falling, open interest is falling. That means market is getting weaker. Additional buying is not coming in. Okay. तो जो मतलब प्राइस बढ़ रहा है वो कम वॉल्यूम पे बढ़ रहा है एडिशनल बाइंग इज नॉट कमिंग इन ओपन इंटरेस्ट फॉलिंग इज दैट पीपल हु हैव एक्चुअली टेकन हु हैव बॉट बिफोर यू आपसे पहले जो लोग ने लिया है दे आर आल्सो एग्जिटिंग ओके दिस स्टॉक और क्वाइट पॉसिबली ये जो प्राइस है ये पर्टिकुलर स्टॉक का यू नो दैट इज फॉलिंग इनटू समबडी दैट इज फॉलिंग इनटू वीकर हैंड मतलब एक स्ट्रॉन्ग हैंड्स या हम लोग कहते हैं कि सैवी इन्वेस्टर के पास से ये निकल के वीकर इन्वेस्टर के पास आता है सो
right? Price falling, volume is rising, OI is rising, market is weak. मतलब अगर काफी फास्ट मार्केट गिर रहा है, so you know, let's say for example, I just show this to you on, I just found this pattern here. See, this is, I'm showing, yeah, start of State Bank. See, over here, prices are falling, open interest is rising, and volumes are also on an increase, right? So in this phase, the price is slightly weak. Again, this is something that we are seeing in hindsight. Okay. See, now this price is falling, but what is happening to open interest? Open interest is also declining. Okay. And this, if you see, the volumes are also tapering off. देखिए, ये डाउन मूव जो है ना, वो ज्यादा सस्टेन नहीं होगा. सो नाउ वंस इफ द प्राइस इज कमिंग डाउन टू अ मेजर सपोर्ट बेस, या तो फिर एक गैप भी है, this could be the stock that you watch for a quick bounce. Why? Because volumes and open interest are not supporting a decline in price, right? Okay, please go through this. ये concept है. If you find it useful, I combine. Okay, no, not necessarily. Right. Okay, Sivabrata, can you shift call to put or put to call within expiry period? The answer is yes. Is OI directly proportional to the volume? No, they are entirely two different parameters. Jitendra Singh ji, it is not proportional. Okay, right. So this is something on volume and open interest. Uh, Now, again, an important concept. What is meant by an intrinsic value? Okay. Intrinsic value का मतलब क्या होता है? Again, this is a theoretical concept. Why? Because it just gives you the value of the option. Now, what happens is this, that intrinsic value क्या है? That's another. See, intrinsic value is the difference between the cash market spot price and the strike price of the option. So, and the intrinsic value is spot minus strike. So let's take a look at with an example. Now, the current price of AU Bank is 700, let's say 790. Here it is at 790. Okay. So at this price, this, let's say, let's take a look at 780 ka. Right. So what is the spot price? Spot price is 790. ये क्या है? स्पॉट प्राइस. स्पॉट तो ऊपर देखा था ना हमने इधर. Right? Now we are looking at 780. ये क्या है? Strike price. So what is the intrinsic value? Intrinsic value is 790 minus 780, or spot minus strike. This is intrinsic value
is 10 rupees. What is the premium? The premium is 19 rupees. So premium कितना है? 90. Okay. So तो इसमें what is the time value? What is the time value or the extrinsic value is 19 minus 10, which is 9. So assuming that the price closes at around let's say 780, okay, ये option price will only have intrinsic value. अगर ठीक है, अभी मान लीजिए करंट प्राइस इज 790, 789 को 790 कर लेते हैं। अगर प्राइस 790 पर ही बंद होता है तो आपका ये जो प्रीमियम है 780 का, इट विल कम डाउन टू 10 rupees. Prices will still expire in the money, but this premium will come down to 9 rupees. Okay. Why? Because that is the extrinsic value or the time value of the option. So time value of the options you will only find in the money options. Out of the money options में आपका सिर्फ extrinsic value होता है. Okay. Extrinsic value का जो number होता है, that will get destroyed. It will get wasted by the time your uh, the expiry comes into play, right? Yes, no, no, yes, yes, no. अगेन इसमें थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट क्यों है ये? अगर आप एक्सपायरी डेट पे ऑप्शन के सेलर हो, देन यू वांट टू चूज द मोस्ट रेलेवेंट प्राइस एट दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो ऑप्शन तो मार्केट का डायरेक्शन क्या है, इंडिविजुअल मार्केट का डायरेक्शन कितना है, मार्केट का वोलेटिलिटी कितना अंदाजा लगा सकता है, आपका क्या अंदाजा है एट द टाइम ऑफ टेकिंग द ट्रेड। दिस इज वाई uh, this is why this discussion of intrinsic value and extrinsic value is important. Okay? ठीक है? Can we deploy short straddle from Paytm Money app? Uh, I mean, again, marketing का question है. Okay. Any questions on intrinsic value and time value? So, what is the time value? Premium minus intrinsic value. Okay. तो जब भी आपका ऑप्सी ना व्हाट हम एक्सपायरी के दिन पे व्हाई डू वी सी सच अ रैपिड डिक्लाइन इन द प्राइसेस ऑफ ऑप्शन? देखिए, इफ यू सी, आपको एक एग्जांपल, लेट्स लुक एट, लेट्स से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वी लुक एट दिस, लेट्स से वी आर लुकिंग एट 800 का SBIN. Let's look at 800 का कॉल स्टॉप एक्सेस, दैट इज व्हाट थोड़ा टाइम लगेगा लोग।
Now, if you see in last couple of days, okay, see the way the value of the option has deteriorated. Okay, price, look at, see, on a close to close basis, 790 से today the prices have closed at 784. Okay, आज का बंदा. So prices down by just 1%. Prices down by just 1% in last 5 days. But look at what happens when you look at the premium. Okay. 800 ka premium in last 5 days has gone down from 9 rupees to 2 rupees 30 paise. See, very fast deterioration in the option value of this is an and just think about it. This is almost an at the money option. आप समझे तो ये लोगों को मार देती है एज सून एज यू कम as nearer to the expiry, your time value of the option price reduces, deteriorates rapidly. Even if the price remains rather unchanged, अगर प्राइस में ज्यादा बुलिशनेस या बेरिशनेस नहीं होता, फिर भी प्राइस फिर भी प्राइस ऑप्शन का values will deteriorate sharply, and this is what is happening in Nifty now because we have seen such a flat movement. Okay, देखिए निफ्टी में इफ यू सी व्हाट इज हैपनिंग इन सिंस लास्ट if you see I just load nifty का chart. Okay. See, we are literally not going anywhere. There has been no vertical movement in last देखिए couple of days and even last. Okay, so we only have a very sideways range. Okay. So it depends. If you are a very, very short-term trader, if you are a very, very sharp trader, you may still be able to, extract some money out of it. But okay, in case there is a rapid move, okay, in case there is a rapid move, okay, on the higher or lower side, you will see an explosion of premium. Later, see, later what happens? 2500, you can a lot of people will just simply sell at 25 uh 25,000 25,000 25,000 का puts यहाँ पे बेच देंगे in the expectation that the prices will not go up above this before the expiry. In that case, there will be some profits that will be available to the option sellers. Okay. ऑप्शन सेलर जो है दे विल थ्राइव वो लोग अगर साइडवेज नैरो मूवमेंट में है तो ऑप्शन सेलर्स विल गेट टू ईट द प्रीमियम. बट in a directional move it is the options buyer who will stand to gain. uh, there have been instances. Basically, see, I am an option buyer because that is the way my mindset works. I don't sell options. I am always in personally, and maybe I'm in a minority. I look to buy options rather than sell options. Okay. So now we'll take a quick summary of buyer of a call buyer and a call seller. Then we go to put buyer and a put seller. देखिए ये basics है. You have to understand this before you move on to more advanced strategies.
like call spreads and so on and so forth. Okay, so we'll go back to our screen. We'll go back to the presentation and summary of a call buyer and call seller. See, buyer has a right to buy at the strike price. Okay, pays premium to the seller. Okay, receives premium from the buyer, obligation to sell at the strike price. Okay. So buyer of the call will benefit from the rising prices. Okay, and seller of the call will face a loss from rising prices and a profit from falling prices. तो अगर आपका प्राइस गिर रहा है तो सेलर ऑफ द कॉल के लिए प्रॉफिट होगा. अगर प्राइस इज कमिंग डाउन, अगर प्राइस इज गोइंग अप, द seller of the call will be at a loss and the buyer will be in a profit. Okay, buyer of the call has a potential for unlimited profits. Okay, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एक्सपायरी में, अगर if I am buying an option uh, earlier on during uh, earlier on during the start of the contract, I have more time, okay, for the prices to go in my favor. In that case, if I pick the stop right and if the price goes on in my favor, I can make potentially a huge amount of profit. Let's in something like, let's go back to our charts. Let's look at uh, something like AU Bank, which has seen a very sharp rally. We had identified AU Bank in one of our uh, calls that we in the research section. If I am buying AU Bank and 26, just loading, just have to wait for a couple of seconds. And let's say 740 calls, they have gone up, let's say from whatever, from 6th या 7th को मैंने दिया था trade, they have gone up from 16 to 65. Okay. This is what is 3x, 4x problem. Okay. AU Bank has gone up from 6 से लेके today is 19, so in 10, 12 trading days, it has gone up by 4 or 5x. Okay. So ऐसा नहीं है कि सिर्फ sellers को ही profit मिलता है, even buyers can be on the right side of the market, right? So this is summary of a call buyer and a call seller, and summary of a put buyer and a put seller, right, but not the obligation to offer delivery at expiry. Okay, so you have a right, but not an obligation. Seller of a put has to take delivery at expiration if exercised. तो वो उसके पास आ जाएगा. Pays premium to the seller. Buyer of a put will pay a premium to the seller. Receives premium from a buyer. Okay. Profit from falling prices. अगर price नीचे आ रहा है तो buyer of a put will benefit and seller of a put will see a loss if the prices are rising. Conversely, अगर price बढ़ रहा है, then a seller of a put will make a profit. Or if the price does not reach uh, the threshold price, in that case, you will get to keep the premium. Okay. Unlimited profit potential for a buyer of a put, unlimited loss potential for a seller of the put. So now we can have payoff graph. See, payoff graph क्या है? देखिए payoff graph है ना, ये बहुत बहुत important चीज है. Okay. आपको graphically है ना ये दिखा देता है. See, I'll just show you payoff. What uh,
Now, let's continue with this example of AU Bank. We just change. Okay. You can have, there are number of different softwares where you can see the, let's add a strategy. Let's say you are bullish on AU Bank. You expect the price to go from 790 odds. So we'll just take a long call here. Okay. So if I am buying an 800 call, okay, now this is the premium. This is the premium 8.3. So now my break even kabhi hoga. See, you will see this number somewhere. Break even will be 811. How is it got? ये number कैसे आया? Strike plus the premium. Okay. So 800 का strike पे मैं ले रहा हूँ. Current price of AU Bank is 790. If price goes up from 800 by 8 rupees, I will start to make a profit. Okay. But obviously there will be a limit. तो ये it is ये भाव तो आने वाला नहीं है. So I am not going to see this price of 856. इतना तो शायद 4-5 दिन में आएगा नहीं. But अगर ये if I am taking this, sorry, now in this case the max loss is 8,350. This is the premium that is paid. Very low probability 29.13. Max profit is infinite. देखो ये infinite का sign है. Now supposing instead of uh, long call, what I am doing is I am selling a call. See, if I am selling a call, this my max profit is 8,350. अगर मान लीजिए समथिंग हैपन्स, एयू बैंक में ये इंडसइंड बैंक जैसा कुछ मूवमेंट आता है और नेक्स्ट बिफोर एक्सपायरी अगर इसका प्राइस क्रैश हो जाता है, समथिंग हैपेंस एंड द प्राइसेस दे क्रैश, इन दैट केस माय लॉस विल बी अनलिमिटेड. देखो इसमें यहाँ पे करंट पीएनएल विल शो यू, इट शोज यू एंड a possible probable loss of 34,000. सो कभी कभार क्या होता है कि ऑप्शन सेलर में मार्केट में अगर बहुत बड़ा मूव आ जाता है इन आइदर डायरेक्शन, आइदर ऊपर, आइदर अप और डाउन, option sellers can have a really tough task. Even those guys who are trading straddles, they carry overnight positions. They they have to really change their position very fast. Okay. So I know a lot of people who work in prop desk पे काम करते हैं. They understand what the volatility is, fast moves. If you are somebody who plays straddles and so on and strangles, you really have to learn how to manage your position. Okay, so this is something on payoff charts. You can just simply go to your software, or maybe there are a lot of places where you can create payoff charts. And please, just understand this concept because we had to cover a lot of things in a lot of time. Okay, so does anybody have any question on this? Chart not visible high, right? अभी है चार्ट विजिबल हो गया, चार्ट विजिबल. आई होप यू कैन सी द राइट. तो ये हाँ तो थोड़ा टाइम गया. सो दिस इज व्हाट. सो जस्ट टू पैराफ्रेज, call and puts are the basic building blocks of options trading. Uh, it can be it can be a little bit challenging in the initial stages. My suggestion to you is that observe call prices, observe put prices to get a hang of it. Uh, and options can be used for several purposes. Let's say, तो अगर ऑप्शन सेलर जब भी कोई कहता है ना कि ऑप्शन सेलर पैसा बनाता है,
तो अगर उसके पास अंडरलाइन डिलीवरी है, अगर मेरे पास एयू बैंक का डिलीवरी है, वो भी सफिशिएंट क्वांटिटी में, आई कैन स्टिल मेक अ लिविंग बाय सेलिंग ऑप्शंस. ओके, so why is it possible? Because I don't have to pay the premium. Now let's say for example uh, मैंने एक बेरिश पोजीशन क्रिएट किया है और मुझे लगता है कि ये 800 के नीचे चला जाए, then what I can do is that I can simply, I expect the prices to go down. In that case, I will be सेलिंग कॉल्स में कॉल भी मैं बेच सकता हूँ आई एक्स, राइट. तो अगर मेरे पास डिलीवरी है, इफ आई हैव डिलीवरी, लेट्स से इफ आई 790 का करंट प्राइस है, 8 रुपीज मेरे पास डिलीवरी है, तो मैंने 8 रुपये 30 पैसे में मैंने एयू बैंक के शेयर्स, मैंने ऑप्शन, कॉल ऑप्शन बेचा है. व्हाई? बिकॉज आई थिंक आइदर प्राइस इज नॉट गोइंग टू हिट अराउंड 800, और इट विल स्टे, or it will decline from there. Okay. In any ways, I'm making almost 1% on my on I'm making almost 8 rupees per share. तो इसका मान लीजिए 1000 शेयर का है, then it is a clear profit for me. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास अंडरलाइन डिलीवरी है, अगर एयू बैंक 8 रुपया बढ़ता भी है, आई हैव माई वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन इंक्रीजेस, तो मेरा जो अंडरलाइन का वैल्यू इंक्रीजेस, और मेरे को तो एयू बैंक मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, मेरे को तो इसको 5-10 साल भी बेचना नहीं. ठीक है. सो जिसके पास डिलीवरी अंडरलाइन का है, विल दे कैन अफोर्ड टू बी अ सेलर इन ऑप्शन इन अ राइजिंग मार्केट, or for that matter in a falling market. If you are against the overall market, even if you are a seller, you will tend to lose money. But so options, you work the way you want to. Okay. So right. So this is, we are coming to end of the presentation. If we have some very quick question and answers, maybe I'll take them. Okay. Can we make 10% type with this combination of irrespective of direction? See, Tanuj Agarwal ji, non-directional strategies will not be there always. Okay. Can you make 10%? The question is how leverage you are. मेरे हिसाब से try to make 1%, 1.5% per month, then see if you can leverage it up to 10%. Okay. Okay, guys. So I think we will end the session here, and I'm not having any questions, any further questions on this. So okay. So see you tomorrow. Tomorrow we are going to talk more about mutual funds and things like that. So again, it is important part of your investment journey. So I hope you all make it tomorrow. And okay, so have a great time, everyone. Manish Shah, signing off this current session. Bye, everyone, and have a great evening.